बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लेके चलेंगे जहां कॉन्फ्रेंस जारी है और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार खिताब कर रहे हैं। And effectively amongst the largest possible group of people, thereby providing equity and inclusion. However, as we have seen in the recent past, the structural transformation and advances in technology often have been treating ramifications for the nature and environment. Resultantly, the good governance practice in 21st century have to navigate carefully between the opposing objectives of climate change, environmental sustainability, and the adoption of technology. Ladies and gentlemen, we have to continue adopting technology which could place us amongst the developed and industrialized economies of the world while ensuring that our economic models are inclusive and factor in the cost of such advances to the environment and the society at large. Dear colleagues, the public financial managers of today, many of whom are trained accountants, have a critical role to play in creating financial models that can advise the government on the efficiency of public sector allocations. The government has a high demand for such skills, and these are critical for the efficient and effective private sector too. Budgeting is an important public sector governance. It is a function that transcends the sectorial boundaries, and the chartered accountants are logical choice that in preparing such budgets, they are not only responsive to the needs of the people, but also in conformity with our development needs, while also ensuring the sustainability, which is socially and environmentally responsive. I would like to remind you, I'm sure you are well read, well informed, and your memories are great. This country just 4 years ago was somewhere different. In 2013, Pakistan was a macroeconomic unstable country, declared globally and predicted to be going in default within 6 to 7 months, no matter which political party would win. I'm reminding you, February 2013, election took place. PMLN got the, they were lucky to win the election, and we had the responsibility to fix that macroeconomic unstable economy of this country. It was double-digit inflation, it was high interest rates, it has a rupee which was shaking, and it had very low forex reserves. And the GDP growth of the average previous 5 years was less than 2%. That's the state of economy Pakistan was in 2013. Then we took the responsibility. We started off, and where did we reach? First of all, within 5 days, we presented the budget. I remember the Prime Minister taking oath on 5th of June 2013 and the Cabinet taking oath on 7th of June 2013. Within 5 days, we managed to present the budget. Obviously, I was working since we won the election in May, but I was not visiting the divisions, and so all that formal process had to be done after I was sworn in. For my preparatory work behind the scene, yes, I was doing it. Within a month, we didn't waste time. Once the budget was approved, within a month, on 4th of July 2013, we signed the IMF agreement. If you are in such a state of economy, and you still decide कि मैंने खुदकशी करनी है, कि मैंने अपना इकोनॉमी को ठीक करना है, मैंने IMF जाना है, कि मैंने दोस्तों के पास जाना है, this is too slow and too unfair treatment to the nation, I would believe, and the economy particularly. So where did we reach in 3 years? I don't want to walk you along all the distance we covered. Within 3 years, the whole world was acknowledging Pakistan progress in economic, and they were praising. Your ratings went up, and by 2016 and 17 fiscal year, we had low inflation, 4% CPI. We had food inflation 2%. We have stable currency of 104. We inherited at 100 rupees, and it went shot up in the beginning to 111. We had 24 billion of foreign exchange reserves, including State Bank with $18+ billion. We had growth at around 6%. These things are music in the developed world.
if you perform, but we are always ready for political instability in this country. What was the projection of the PricewaterhouseCoopers, which is unchallengeable, that Pakistan would be 18th global economy by 2030? And Canadian and Italian economies would be behind you. As a nuclear power, you would be sitting at par with the other 19 members of G20. Now, this was the Pakistan destiny. I wish the political parties of this country should have worked together, hand in hand, and reached and shortened that 2030 journey. In 2016, we could have easily made 2026, 27, but provided we had worked hard together. I remember presenting the budget 2013-14, and I kept saying that let's have Charter of Economy. Fiscal year 2015, let's have Charter of Economy. Each year I was presenting 3-year, medium-term macroeconomic framework with the budget for the fiscal year. What else can one do? But as I said, all that dream shattered. We had dramas of Dawn, dramas of Panama, and we ended up at a point where Pakistan now is predicted recently 54th economy in 2034. It is, it breaks my heart, and I feel so upset कि पाकिस्तान की किधर थी या ना इसकी जगह और हम किधर जा रहा था, पाकिस्तान किधर चला गया. बहरहाल, this is what has happened to this country. I don't want to criticize, I don't want to go into, but I'm just flagging the facts which are documented globally. Nobody can deny, within and outside Pakistan. Behral, we have seen where we are now. We are having trouble right, left, center. We are again back to macroeconomic challenges Pakistan has been facing. And as a consequence of that, you saw that there was a constitutionally moved, a vote of no confidence succeeded, and a new government of political parties, PDM plus others, was formed. They had very serious challenges. They have been trying, first of all, to rescue Pakistan from a default, which they have done, but at a very high political cost. And I think it is worth it. If it's the choice is the Riyasat and Siyasat, I think Riyasat should take the priority, not Siyasat. मुल्क है तो सियासत होगी ना जी, मुल्क नहीं है तो सियासत कौन सी होगी. और हमने देखा कि हम जहां पहुंच चुके हैं, अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. लेट्स बी ऑनेस्ट. और आई बिलीव दैट यू कैन प्ले योर रोल, एवरीबॉडी कैन प्ले अ रोल. एवरीबॉडी इज एज इंपॉर्टेंट एज द प्राइम मिनिस्टर और एनी ऑफ द मिनिस्टर्स. सो challenges were deep, but unfortunately the devastating floods, the catastrophe you have been through as a country, that has really created multiple challenges for Pakistan. I will come to the floods later, but let me just share with you. I would like to clarify a few things which have been talk of the town, and I've tried to clarify it in Washington, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, APP, APF, etc., etc. There has been a talk about Pakistan that we would go to Paris Club. Paris Club is where you go for rescheduling of your loans, and the members of Paris Club are World Bank, IMF, IFC, IBRD. Usual. And you people as professionals should have been flagging it and criticizing it कि पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे चलो, सब politicians, including PMLN. But I think you guys have not performed your duty as professionals. आपको ये time मुल्क के लिए देना चाहिए. This country has given all of you and me also this recognition that we are, we have been privileged to the extent कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में ये मुकाम बख्शा कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तो इंग्लैंड से पहले किया, फिर मैं यहाँ का मेंबर हुआ 70 और यूके में 75. I was director of finance in UK when I left for Libyan government picked me to set up their Auditor General of Pakistan, Auditor General of Libya, the external audit segment, वो उनका अरबिक में था, इंग्लिश में नहीं था. So 6 chartered accountants from England was hired. And I was one of those. We set up those. I audited Occidental, Mobil, Marathon, all these companies during my 14-month stay there. तो बात ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, पैसे माशाल्लाह ये सीनियर लॉर्ड जो बैठी है तो ठीक ठाक बना ली है माशाल्लाह. They have financial consolidation. You don't need. Please do contribute your share. You can do in multiple ways, and I think you should. It is our duty. मैं तो उसी पैशन और उसी इंटरेस्ट के साथ मैं इसमें बिलीव करता हूँ. सो लेट मी अश्योर यू
कि जो ये इस वक्त एक है ना जी कि जी वो पैसे, यू नो एवरीबॉडी सिंस वी आर ऑल प्रोफेशनल यू अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल हमारा अकाउंट होता है, हम अगले साल प्रोजेक्शन होती है हमारी एक्सपोर्ट कितनी होगी, हमारी इंपोर्ट्स कितनी होगी, हमारी रेमिटेंसेस कितनी होगी, देन हाउ वुड बी, अगर खुदा न खासा उसमें बिग गैप हो देन ऑब्वियसली मैटर ऑफ वरी, बिकॉज हाउ वुड यू फिल दैट गैप. नो दिस हैज बीन द डिबेट ऑन गोइंग और मार्केट्स आर नर्वस फॉर नो रीजन. लेट मी टेल यू कि आज अगले साल जो करंट चल रहा है फिस्कल ईयर, इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है इज अबाउट 32 to 34 बिलियन डॉलर्स. 22 बिलियन की आपकी मल्टीलैटरल लाइबिलिटीज ड्यू होनी है, रफली 12 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जो ट्रेड प्लस रेमिटेंसेस माइनस करके वो है 34. इज इट समथिंग ह्यूज एंड स्पॉन्टेनियस दैट यू नो गवर्नमेंट कैन डू इट? यस वी कैन डू इट, व्हाई नॉट? वी हैव डिड इट इन फिस्कल ईयर 2016-17. लुक एट द नंबर्स, we did it about 35, roughly same amount. उस वक्त इसलिए चाहिए था because we were setting up this LNG plants, we were setting up the energy generation plants. 18 घंटे की लोड शेडिंग शायद आप भूल गए हो 2013 में, और हमने वादा किया था हम ये लोड शेडिंग को खत्म करके जाएंगे. We completed it and we did it, but it required money. If you wanted to stay in the stone age, fine, then वो 32 बिलियन की जरूरत नहीं थी, फिर शायद 20 बिलियन से काम चल जाता. नहीं, चैलेंज लेना पड़ता है जी, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और ली हमने. वी सक्सेसफुली परफॉर्म्ड एंड सक्सेसफुली डिलीवर्ड. क्या हमने ज़र्ब अज़म नहीं लड़ी? क्या हमने रद्दुल फसाद नहीं लड़ा? क्या हमने फाइनेंस नहीं किया? इज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर फाइनेंसिंग. वी डिड आस्क फॉर बैगिंग बॉल लेके हमें पैसे दे दुनिया, ये तो दुनिया की जंग थी. लेकिन आपको ऑनरेबल नेशन और दुनिया की कॉमोडिटी ऑफ नेशन में इज्जत डिग्निटी के साथ अगर बैठा तो ये काम हमें फिर करने पड़ेंगे, ये चैलेंज कबूल करने पड़ेंगे. हमने किए. एंड बहरहाल एज ए सेट के कोई, मैं मार्केट्स को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आपको पैगाम दे रहा हूं कि कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है. वी आर बैक इन बिजनेस, इंशाल्लाह वी विल अरेंज एवरीथिंग, नथिंग इज टू वरी. पाकिस्तान विल बी फाइन. किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा. पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से. ये भी यही चीज़ें हमने सुनी हुई है 2013 में भी और पहले भी 98-99 में भी सुनी हुई है. तो मुझे तो वैसे उस वक्त लाया जाता है जब बिल्कुल वो कहते हैं पट्ठा बैठा होता है, जो पंजाबी हम कहते हैं, जो बिल्कुल तबाही हुई होती. तो मैं, अल्लाह का फजल है, 98-99, आई एम नॉट टॉकिंग रेटोरिक, आई एम टॉकिंग विद डिलीवरी. 98-99 आपके सामने है. पाकिस्तान वाज हैड टू फेस द वर्स्ट सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड. आपको याद होगा जब हमने एटमी धमाके किए, ऑब्वियसली दे वांटेड टू पनिश अस. लेकिन अल्लाह का फजल है, मैं उस वक्त फर्स्ट डे से फरवरी 97 से आई वाज ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर, सम टाइम मेरी इंडस्ट्री भी थी. लेकिन जब वो हालत हुई तो फिर मुझे 6 नवंबर 1998 को ये जिम्मेदारी दी गई. रुपी हैड गॉन टू 69 रुपीज इन द मिड डे और क्लोज 67 होता, उस जमाने में हाईएस्ट था. और इसी नेशनल असम्बली में तकरीरें हो रही थी कि ये दिसंबर 98 में 100 रुपये का होगा, चाहे 14 तकरीरें पढ़ें आप. तो बात यह कि वही पाकिस्तान है. हम अगर अल्लाह पे भरोसा करें और अपनी पूरी एफर्ट करें, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं, और कामयाबी मिलती है और मिली है. इसी तरह 2013-14 में मैंने आपको स्टोरी सुना दी. तो बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है. मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह पे भरोसा करके, एंड आई एम डूइंग आई डोंट बिलीव इन डूइंग वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली. आई बिलीव इन कवरिंग द एंटायर ईयर, फिस्कल ईयर. एंड अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट, आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे. मैनेज माजी में करके दिखाया है, मैनेज करेंगे इंशाल्लाह. पाकिस्तान ठीक होगा अल्लाह के फजल करम से. पाकिस्तान को ठीक हो सकता है, होना चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है. तो सियासत बाद में होती रहेगी. बहुत लोग कहते हैं जी आपने बड़ी गलत काम किया है, आप अगर ना ये यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते तो आपकी पॉपुलैरिटी उसी तरह ठीक रहती, कोई और जो है अपने बोझ के नीचे दब के गिरता. ये बात सही है. द चॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट. रियासत और सियासत, should we care for our political capital, should we care for the country, should we care for 230 million people of Pakistan? That is the difference. ये हमने सोच समझ के किया, कोई इसमें कोई शक नहीं है. आपका ख्याल है ये महंगाई जो है ये 6 महीने की लाई हुई है? ये 4.5 साल की इनकॉम्पिटेंस, मिस गवर्नेंस एंड बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट का नतीजा है. ये चीज़ें ना 6 महीने में आती हैं ना 6 महीने में जाती हैं. सो आवर फोकस इज दैट इस डैमेज, इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रोकें. वो अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं.
दूसरा ये तक हम इसको डिफॉल्ट से बचाएं, वो हम अल्लाह के फजल से कामयाब हो गए हैं। अभी हमने इसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ लेके जानी है। हमने इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, हमने रुपए को स्टेबल करना है, हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करना है, हमने जीडीपी ग्रोथ को वापस जो 2% ऑफ प्रोजेक्ट हो चुकी है पाकिस्तान की इनकमिंग बिकॉज ऑफ फ्लड्स ऑल्सो, वो एक नेशनल क्लैमिटी है, नो बडी कैन डू एनीथिंग। तो इन चीज़ों को हमने करना है। मेरी गुजारिश ये है कि आप भी अपना जो रोल है वो अपना अपना वो अदा करें, एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी आउट ऑफ इट अल्लाह के फजल करम से, एंड विद आवर कंबाइंड एफर्ट्स आउट ऑफ दिस मैन मेड डिजास्टर। I've been writing articles, I've been being interviewed on you phone, क्योंकि मेरी ज़रा इंटरव्यू की ज़्यादा तकलीफ कुछ लोगों को होती थी, so there was a ban on me। मेरे साथ तो उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। मुझे आपसे अफसोस है कि आप में से कोई नहीं बोला। ये इशफाक तोला साहब मुझे जरूर रब्ता करते थे। You should have raised the voice। Do you expect I have not filed 20 year tax return? What a joke! This can happen only in Pakistan। 1981 to 2001, this is my case. I didn't file tax return. I never delayed my tax return by 20 minutes. I have been giving extension as fourth year. This is my fourth term, 3 times finance minister, but I've never availed even that extension because I knew that I'm going to give extension in filing of return. तो आप मेरे साथ ये बात करते हैं, तो that person has no issue, but please मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक अपना हर किस्म की फेजेस आती हैं, बट एवरीबॉडी मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, नेशनल ड्यूटीज और प्रोफेशनल ड्यूटीज अकॉर्डिंग